Good evening, listeners, and welcome to another edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic and business news of the day. And today being Sunday, we'll also be taking calls from you, our listeners, on mutual funds and related issues. You can call us on 2331-4444, 2371-7106 and 2371-7117. If you're calling from outside Delhi, please prefix the STD code of the capital, that's 011 before the numbers. I am S. Rangabashyam, and with me is my co-anchor in Hindi, Vishal Sharma. Good evening, Vishal. गुड इवनिंग रंगा। नमस्कार श्रोताओं, कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र में हम एक बार फिर हाजिर हैं। आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों को हम कार्यक्रम में सीधे शामिल करेंगे। आप फोन करके म्यूचुअल फंड से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर, जैसा कि अभी रंगा ने बताया, मैं एक बार फिर दोहरा देते हैं, 23314444, 23717106 और तीसरा नंबर है 23717117। दिल्ली से बाहर के श्रोता इससे पहले 011 लगाना ना भूलें। आपके सवालों के जवाब देने के लिए आज कार्यक्रम में आमंत्रित हैं म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट धीरेन्द्र कुमार। धीरेन्द्र जी नमस्कार, स्टूडियो में आपका स्वागत। धन्यवाद आपका। और सबसे पहले हेडलाइंस के साथ हैं एस रंगाभाष्यम। The top stories. Prime Minister of United Kingdom Boris Johnson says his visit to India to deliver on the things that really matter to the people of both the nations. Retail online transaction platform Unified Payment Interface will continue to dominate the digital payment space in the country, says a report of PricewaterhouseCoopers. And Brent crude oil futures end the week at $107.92 per barrel. ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा है कि उनकी आगामी भारत यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध और प्रगाढ़ होंगे। देश में डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में खुदरा ऑनलाइन लेन देन प्लेटफॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई की अहम भूमिका बनी रहेगी और सप्ताहांत में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतें $107.92 प्रति बैरल रहीं। And now for all the details. Ahead of his India visit, the Prime Minister of United Kingdom, Boris Johnson, said his visit to India will deliver on the things that really matter to the people of both the nations. British Prime Minister Boris Johnson will pay a 2-day visit to India on the 21st of this month. In details released on Saturday, Johnson's office said that the British leader would use his trip to India to deepen relations, including in-depth talks with Indian Prime Minister Narendra Modi on the two nations' strategic, defence, diplomatic and economic partnership. The British Prime Minister said India, as a major economic power and the world's largest democracy, is a highly valued strategic partner for the UK in these uncertain times. Mr. Johnson said, in view of the threats to global peace and prosperity from autocratic states, it is vital that democracies and friends stick together. Mr. Johnson's trip will also include a visit to Gujarat on Thursday, where he is expected to announce a major investment in key industries in the UK and India, as well as new collaboration on science, health and technology. जी, और हमारे आज के पहले कॉलर खजुराहो से जितेंद्र फोन लाइन पर हैं। हेलो जी, नमस्ते सर। जी नमस्ते जितेंद्र जी, क्या सवाल है आपका? पहला क्वेश्चन है सर कि जो म्यूचुअल फंड होता है तो इसका चयन किस टाइप से करना चाहिए, मतलब कि क्या उनमें देखना चाहिए कि अच्छा म्यूचुअल फंड है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर हमारा शेयर मार्केट $3 ट्रिलियन का है तो उसमें म्यूचुअल फंड की कितनी भागीदारी है? थैंक यू। यस धीरेन्द्र। म्यूचुअल फंड की अच्छा म्यूचुअल फंड की पहचान क्या है? इसको दो नजरिए से देखना चाहिए। एक तो कि आपके लिए सबसे उपयुक्त म्यूचुअल फंड कौन सा है, तो कि म्यूचुअल फंड करीब 40 तरीके के म्यूचुअल फंड हैं और कौन सा वाला आपके लिए उचित है ये आपके उद्देश्य पे निर्भर करता है, उद्देश्य पे, और आप कितने समय के लिए पैसा लगा रहे हैं। अगर आप कुछ दिनों के लिए पैसा लगा रहे हैं, कुछ सप्ताह के लिए लगा रहे हैं, कुछ महीने के लिए लगा रहे हैं, कुछ साल के लिए लगा रहे हैं,
और इस बात पे भी निर्भर करता है कि आप बाजार के कितने आदी हैं, कितना उतार चढ़ाव से आपका रिएक्शन क्या होगा, उस उतार चढ़ाव को आप कैसे झेल पाते हैं। और इसको ध्यान में रखते हुए सबसे पहले किस तरह का फंड चाहिए लोगों को, ये इस पे विचार करना चाहिए, और ये काफी गहराई से विचार करने की चीज है। और दूसरी बात है कि अच्छा फंड क्या है, वो तो आपको देखना चाहिए कि एक फंड जो कि चढ़ते बाजार में अच्छा करे, गिरते बाजार में कम गिरे, दूसरों की तुलना में दूसरे उस तरह के फंड की तुलना में उसका प्रदर्शन अच्छा रहे। और जब कभी फंड मैनेजर बदले तब उसके बारे में आपको चिंतित होना चाहिए कि ये क्योंकि पुराना जो भी प्रदर्शन था वो उस फंड मैनेजर से जोड़ा जा सकता है। तो ये इस तरह से आप अच्छे फंड की पहचान कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है उससे जरूरी ये है कि आपके लिए उपयुक्त फंड कौन सा है। इस पे ये ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल लोगों के सामने होता है। Right, let's move on and take our next caller again from Central India. We have Ravi joining us from Bhilai. Good evening, Ravi, and what's it that you'd like to talk about? Good evening, Rangabasham ji, and good evening, Sharma ji, and good evening, Dhirendra ji. Thank you so much. Go ahead, put your question. Yeah, my question is the Indian rupee in the near future or the distant future, can it be one of the internationally traded, demanded currency for international trade? Right, this question is particularly in... Ravi, as you know, this is a program which is dedicated for mutual funds only. I don't know whether Dhirendra would like to respond to this. No, I'm not the right person to answer this question, and my opinion doesn't matter here. जी धीरेन्द्र जी, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, तो यहाँ एक शुरुआती दौर में जो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहता है या म्यूचुअल फंड्स में जाना चाहता है, उसके लिए हमारे सामने दो रास्ते होते हैं, दो विकल्प होते हैं कि या तो हम सिस्टमैटिक वे में जाएं, SIP करें, या फिर एक लमसम का भी एक हमारे सामने इन्वेस्टमेंट का एक ऑप्शन होता है। इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन शुरुआती निवेशक के लिए, म्यूचुअल फंड्स के लिए बेहतर होता है आपके नजरिए से? निर्भर करता है। अगर आप कम समय के लिए पैसा लगा रहे हैं, आप फिक्स्ड इनकम फंड में पैसा लगा रहे हैं, तो आप बेशक निश्चिंता से आप सारा पैसा एक साथ लगाइए और डेट फंड में लगाइए। इक्विटी में जब पैसा लगाने की बात होती है, और तब किसी भी शुरुआती निवेशक को एक साथ पैसा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इक्विटी बाजार में उतार चढ़ाव भारी देखा जाता है। शुरुआती निवेशक के लिए वो उतार चढ़ाव से रिकनसाइल कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। अगर आप तुरंत एक रकम लगाए और अगर वो भारी रकम है आपके नजरिए से, और वहां पे अगर जिस तरह का उतार चढ़ाव हम देखते हैं, 10-15% का उतार चढ़ाव महीने में बहुत आम बात है। वैसी स्थिति में बढ़े तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर गिरावट हो और आपके लगाते ही और आप पहली बार लगा रहे हैं, इसलिए SIP आपको जरूर करना चाहिए। SIP के जरिए ही करना चाहिए। बल्कि मेरी सलाह होगी कि अगर आप सीजन इन्वेस्टर है, अगर आप काफी सालों से लगा रहे हैं, उसके तब भी लगाना चाहिए, क्योंकि बाजार के उतार चढ़ाव में रिकनसाइल करने में काफी साल लग जाते हैं। Yes, Dhirendra. We are talking about investing in mutual funds just for the benefit of our listeners, who would be investing. Could you give some kind of a checklist or preliminary points, 3 or 4 points, which one should keep in mind before starting off? And I'm talking for a person who is just a novice in this field. Okay. Generally, I think that one should not be prescriptive, but nevertheless, people are looking for quick prescriptions. So I would say that, most people investing in, most people who want to invest, they should ask that, why the first and foremost question, in fact, the most important driver to any investment, actually, most investors think that there is some expert who will tell you. Most of the expertise actually lies with the investor himself. There can't be a bigger well-wisher than yourself. So with that in mind, I would say that the first question you should ask is, for how long can you invest? For how long can you spare this money? When are you likely to need the money, or for how long you are unlikely to need the money? Yeah. That is the first starting point. If it is 5 years and more, then consider equity. Okay. Now there are different vehicles through which you invest in equity. First time investors, they should never invest in an all equity fund, and they should never invest a lump sum. They should not invest at one go. So for them, the starting point should be
a fund which is 50-60% into equity or 70-80% into equity, but not all equity. Right. Invest through SIP. And I think, if somebody starts like this and continues for 2-3 years, I think he's laying good foundation for beating inflation in his lifetime with his investment. Right. Well, listeners, you are tuned into the phone-in edition of Market Mantra on AIR FM Gold. And just to remind our phone numbers are 2331-4444, 2371-7106, and we also have a third dedicated line, that's 2371-7117. And please prefix the STD code, that's 011 before the numbers. Let's move ahead and take our next caller. We are joined by Jitendra from Jaipur. Good evening, Jitendra, and welcome to Market Mantra. हेलो. हाँ सर, ये बोल रहे कि जैसे मैंने 4-5 स्कीम लिए हुए हैं. एक तो आदित्य बिरला का PSU इक्विटी फंड है, महिंद्रा लाइफ का मल्टी कैप है, और एक्सिस का ब्लू चीफ है, और आईसीआईसीआई का नेक्स्ट 50 का है. लेकिन मैं सोचता बहुत ज्यादा, आप बोलते हैं 2-3 से भी काम हो जाएगा, तो मैं अगर फ्रेश करना चाहूँ सब बंद करके, तो कौन सा 2-3 करूँ, या इसको ही चलाऊं, या क्या करूँ सर? नहीं, अगर ये फंड तो बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि इसमें मुझे ओवरलैप नहीं दिख रहा है. आपके पास 2 लार्ज कैप फंड है, एक ब्लू चिप फंड है, और एक निफ्टी का इंडेक्स फंड है. तीसरा जो बिरला का ESG फंड है, वो रिलेटिवली नया फंड है. हाँ, अब और मत जोड़िए, और फंड मत ऐड कीजिए, और इन फंड को दिन चलाइए, और आप खुद ही निर्धारित हो जाएगा कि कौन सा फंड आपके पास नहीं होना चाहिए. जी. हमारे अगले कॉलर महाराष्ट्र से भीम जी. हेलो. हाँ, नमस्कार जी. नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत. हाँ सर, मैं काफी होमवर्क करने के बाद कहीं इन्वेस्ट करता हूँ. हेलो. जी बोलिए. जी, सवाल पूछिए अपना. आई हैव डिसाइडेड टू गो इन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, और वो टॉप 10 में ही है, टॉप 1 में समझ लीजिए, ऑल इंडिया का नंबर 1 कंपनी में. तो कैन यू हिंट मी लिटिल बिट इंफ्रास्ट्रक्चर में, आई एम गोइंग राइट और रॉन्ग? यस धीरेन्द्र. इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का एक समय काफी बोलबाला था. 2008 के पहले और या 2008 तक का जो बूम था, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का काफी डोमिनेंस था उस परफॉर्मेंस में. और इंफ्रास्ट्रक्चर फंड कई सालों से ये स्ट्रगल करता रहा है, और अब अभी हालांकि ढेर सारे फंड है और इसमें पैसा भी काफी कुछ लगा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद ये इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ये इस स्कीम का मुझे कोई खास कॉन्टेक्स्ट नहीं दिखता है. क्योंकि अगर आप किसी भी फंड में देखें, जितना कोई भी मेन स्ट्रीम फंड, कोई भी डाइवर्सिफाइड फंड, जिसमें से कि अगर आप FMCG और टेक्नोलॉजी हटा दें, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही लूजली डिफाइंड ये एक थीम है. और इसके अलावा जब इसमें बहुत पैसा आया था, उसके बाद कई सालों तक इसका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा. सेलेक्टिवली कुछ कंपनियों में जिसमें कि इस तरह का प्रॉमिस है, कोई भी आम इक्विटी फंड उनमें आराम से लगा सकता है जब भी उचित हो. इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए समस्या ये है कि वो केवल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्टॉक्स में ही लगाएगी. तो उस नजरिए से मुझे ये कंस्ट्रेंड लगता है. और हालांकि पिछले 1-1.5 साल से, पिछले साल इनका प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है, लेकिन उसके पहले देखें तो 5-7 साल तक इनकी काफी बदहाली रही है. और खासकर 2018 में ये जब 15-20% इनकी गिरावट हुई, और इनका ट्रेडिंग रिटर्न भी अगर आप देखें कि अगर इतने जबरदस्त प्रदर्शन पिछले साल के बावजूद, इनका 10 साल का रिटर्न इन फंड्स में 10-11% है, जो कि दूसरे इक्विटी फंड की तुलना में काफी कम है. Right. Let's go across to Mumbai, where we have Ashish joining us on the program. Good evening and welcome to Market Mantra. Yeah, good evening to the team members. Yeah, go ahead. I want to ask Dhirendra is about the bond. What is your opinion about investing in bonds through SIP or through direct purchase of bond? And what is the bond market value in mutual funds? Investing in bond, we have very few bonds for which we have an active market in which individual investors can invest. Investing in bond fund, it is a vehicle, and they have emerged stronger or bigger, and but then you have to be a little careful. You have to be a little careful because what we saw, of course, right now I don't visualize that there is any kind of big credit issue emerging.
So from that point of view, it is not very risky to be investing in bond funds. But one should not forget that, the inverse relationship, as and when the interest rates go up, all funds actually take a hit. And that is very much visible in the negative returns. That will translate into negative returns. So be careful, but it is worth investing. Bond funds worth considering. Very few bonds are worth investing directly. And the advantage of investing in bond is that the bond directly is that you lock into the yield if you hold it till maturity. Well, listeners, you are tuned in to the phone-in edition of Market Mantra this Sunday evening. And as always, this program is focused on mutual fund and related issues. And we have with us joining on the phone line Dhirendra Kumar, our mutual fund expert. Time now for a quick break. उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी। आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से। लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान। अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग। डायल कीजिए 870-001-4242। नंबर एक बार फिर नोट करें, 870-001-4242। ब्रेक के बाद मार्केट मंत्र में आप सभी का फिर से स्वागत। रुक करते हैं अगली खबर का। पीडब्ल्यूसी की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में खुदरा ऑनलाइन लेन देन प्लेटफॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई की भूमिका अहम बनी रहेगी। अभी खरीदें, बाद में भुगतान करें और डिजिटल मुद्रा से भुगतान जैसे नए तरीके भविष्य में भुगतान करने के महत्वपूर्ण साधन बनेंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि भुगतान के ये साधन अगले 5 वर्ष में भारत में डिजिटल भुगतान के विकास को गति देंगे। द इंडियन पेमेंट्स हैंडबुक शीर्षक से जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में डिजिटल भुगतान बाजार में 23% की वार्षिक चक्रवृद्धि वृद्धि दर से लगातार वृद्धि दर्ज हुई है और वित्त वर्ष 2026 तक इसके 217 अरब लेन देन यानी ट्रांजैक्शन तक पहुंचने की उम्मीद है। इस वित्तीय वर्ष में 59 अरब यूपीआई लेन देन किए गए। 2020-21 में यूपीआई लेन देन रिकॉर्ड 22 अरब की संख्या तक पहुंच गया था और 2025-26 तक इसके 169 अरब तक पहुंचने की उम्मीद है। And joining us next is A.K. Upadhyay from Bhubaneswar in Odisha. Good evening, Mr. Upadhyay, and welcome to the program. गुड इवनिंग मार्केट मंत्रा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया प्रोग्राम करते हैं। धीरेन्द्र जी को नमस्कार। थैंक यू सो मच। पुट योर क्वेश्चन सर। धन्यवाद। धीरेन्द्र जी, मुझे ये बताइएगा, मैं निफ्टी एल&टी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में जब भी मेरे पास पैसा होता है मैं डालता हूँ और एसबीआई कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में डालता रहता हूँ जी, और ये निप्पन इंडिया जो स्मॉल कैप है उसमें डालता रहता हूँ जी। तो ये मेरा सिलेक्शन ठीक है, इसमें मैं डालते रहूं या कोई दूसरे फंड की भी कोशिश करूं? राइट जी हाँ, ये तीनों मिलाकर के ये एक अच्छा आपका एक अच्छा पोर्टफोलियो बन जाता है। बाजार के अलग अलग भाग में इंडेक्स फंड के जरिए आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना है, अच्छे स्मॉल कैप फंड का आपने चुनाव किया और एक अच्छा क्रेडिट फंड है। इन पर नजर बनाए रखिए और ये तीनों मिला करके ये एक आपका अच्छा पोर्टफोलियो बनता है। राइट। And Dhirendra, we also have small inputs about how new folios have been opened, and in the financial year 21-22 a staggering 3.17 crore investor accounts new have been opened. What would you say, even in these times, times are uncertain and we see the volatility in the stock market, but despite that it seems kind of people have a rock solid confidence as far as mutual funds are concerned? Yes, mutual fund actually more than confidence, it has become extremely convenient. If you have an Aadhaar card and if you have an online bank access, you can invest in 15 minutes. All these fintechs, they have enabled investment, and that has really, democratized mutual funds. That apart,
I think, there are broader trend, tailwind, which is driving this trend, which is, interest rates have come down, investing in market has become easy, diversification is actually, and diversification and regular investment, through SIP, is enhancing people's experience through investment. Otherwise, for many, many years, mutual funds existed, but mutual investors used to invest in a seasonal way and on a one-off basis, and that often used to be disappointing. So, when you have happy customers, when you have happy investors and they spread the word and investing is easy, and, there are other options, they are on a decline because the safer option, which is fixed deposit, which is a very popular thing in this country, that has been on a decline and it has remained like that. Right. And Dhirendra, I also want to have your opinion and comment on what, Vishal read out some time back about UPI, that, as per one report, from here on, it is here to stay and to increase to probably, 217 billion transactions from a mere 59 billion transactions in the next, 5 years. Does the UPI and, other payment apps also play a role in the mutual fund industry? Yes, very much. In fact, UPI is one thing that, your ability to move your money with ease from your bank account to any other investment or any other account. But that apart, National Payment Corporation of India has also enabled something which is at the heart of, the great success of SIP that we see today, giving a standing instruction. And, giving a standing instruction so that people can, their account can be debited by a defined amount every month. That is enabled by by National Payment Corporation of India, and that is a huge thing. Because earlier people used to give post-dated checks, that, they have to give the instruction of, authorizing banks to honor of such debits hitting their bank. So definitely, this technology enablement has made life easier and convenient. जी, नोएडा से हमारे अगले कॉलर हैं सुरेश जी, सवाल पूछिए अपना। सर, धीरेन्द्र जी को मेरा नमस्कार। जी नमस्कार। मेरा प्रश्न ये है कि सर, मैं एक सीनियर सिटीजन हूँ और मैंने कुछ समय पहले HDFC इक्विटी, HDFC टॉप 100 और HDFC प्रूडेंस, जो कि अभी HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड हो गया है, उसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो मेरी आपसे इंक्वायरी है कि क्या मुझे यहाँ पे रहना चाहिए या मुझे किसी और अच्छे फंड में स्विच करना चाहिए? और दूसरा प्रश्न है, सर, बैलेंस फंड और बैलेंस एडवांटेज फंड में क्या अंतर है और दोनों में से कौन सा बेहतर है? जो पहले बैलेंस फंड हुआ करते थे, अब उन्हें अग्रेसिव हाइब्रिड फंड कहा जाता है, उनमें बदलाव ये आया है कि वो करीब 75% पैसा उनका इक्विटी में रहता है, बाकी 1/4 उनका फिक्स्ड इनकम में रहता है। बैलेंस्ड एडवांटेज फंड उस नजरिए से थोड़ा काफी अलग है। इसको आप इस तरह से देखिए कि आधा पैसा इक्विटी और डेट में लगा रहता है। टैक्स के नजरिए से इसमें 10-15%, 20% ऐसा आर्बिट्राज एवेन्यूज में पैसा लगा रहता है, जिसकी वजह से इसका ट्रीटमेंट इक्विटी की तरह हो जाता है, क्योंकि टैक्स के नजरिए से इक्विटी फंड के लिए 65% इक्विटी में होना जरूरी है। पर बैलेंस एडवांटेज फंड एक तरह से कंजर्वेटिव बैलेंस फंड आप मान सकते हैं उसकी तुलना में, अग्रेसिव हाइब्रिड फंड की तुलना में। और हम वैल्यू रिसर्च में इसे करीब आधा पैसा इक्विटी, आधा पैसा डेट में लगा हुआ वाला व्हीकल आज के दिन मानते हैं। और ये तीनों फंड कैसे नहीं, ये मेरी सलाह होगी कि आपको तुरंत इसमें फेरबदल करना चाहिए। HDFC के फंड की बड़ी बदहाली रही है, हालांकि हाल फिलहाल इनका प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है, लेकिन बीच के 2-3 से 1-1.5 साल पहले तक लगातार 4-5 साल तक इनकी बड़ी स्थिति खराब थी। तो और दूसरे फंड की तुलना में ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी लॉस था। तो मेरी सलाह होगी कि HDFC के फंड में आपका 1/4 पैसा लगाना होना चाहिए, बाकी 3/4 अगर ये, और बाकी 3/4 आपके 3 अलग फंड में लगे और 3 अलग फंड कंपनी के अच्छे फंड में लगे, ताकि जब कभी ऐसा इस तरह की स्थिति आए कि लंबे समय तक, क्योंकि जब HDFC का फंड अच्छा नहीं कर रहा था तो HDFC इक्विटी, HDFC टॉप 100 और HDFC क्रूड, ये तीनों ही एक साथ अच्छा नहीं कर रहे थे।
तो इससे बचने के लिए आपको कोशिश करना चाहिए कि आपका सारा पैसा एक ही फंड कंपनी के अलग अलग फंड में पैसा ना लगाओ. Right. And joining us next is Ashu from Ghaziabad. Good evening, Ashu, and welcome to Market Mantra. Very good evening. And I have two small questions. The first one is talking about the gold. I would request Dhirendraji's viewpoint. Should I invest or buy gold in the current situation? And the second one is just need the names of two mutual funds which would give for an horizon of 10 to 12 years for a monthly SIP of around 3,000 rupees as per Dhirendraji's top choice. Just two names of two mutual funds. Okay. Okay. First and foremost, I'll go to the gold fund just to give you, objective framework. The 10-year return of gold is 5%, and the last 1 year return is 14%. And so, and there has been a period. There has been a lot of period in between. If you look at the annual return from gold, last year the gold, everybody expected that gold will give will be a blockbuster, which it was not. It was down by 5% in the calendar year 2021. Likewise, 2015 it was down by 8%, which is quite unexpected. Most of us actually think that gold is something which will always give positive return. May not be so. So beware of this. I think any investor should have a very limited allocation to gold. Gold works when equity and debt both struggle. And that is something, when we see that there's, doomsday proponent or we think that, the world is coming to an end, that is when actually gold shines, which may not be generally a very good thing. And it's not a very performing asset, but it de-risks you from these two situations. So it should be a very small part of your own portfolio. Choosing good, giving good funds, if I have to choose some, I would say Axis Flexi Cap or, Mirai Asset, focused, Mirai Asset Emerging Blue Chip or, Kotak Equity Opportunity or SBI Focused Equity or, Parag Parikh. Choose one or two of these 4 or 5 which I have listed. And these, to my understanding, are very diverse funds. They are worthwhile funds to be investing regularly over the next 5-10 years. But any equity investment, you can't invest and forget. Right. Review your investment every year or so. Right. We have Bhavani joining us online from Chennai, but due to paucity of time, I'm afraid we won't be able to take the call. So we would request you to please connect with us next week. And let's move on and take a look at the oil scenario. Global crude oil prices continue to rule well above $100 per barrel. On the last day of the trading week on Thursday, Brent crude oil futures ended the week at $107.92 per barrel, while US crude futures ended the week at $103.15 per barrel. अब समय हो रहा है तो हमें यही अब इजाजत लेनी होगी. धीरेन्द्र जी, आप कार्यक्रम में शामिल हुए और श्रोताओं के सवालों के जवाब दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. धन्यवाद आपका. And we would also like to thank all our callers for their active participation in today's program. और अब चलते चलते मुख्य समाचारों पर एक नजर फिर से डाल लेते हैं. ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा है कि उनकी आगामी भारत यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध और प्रगाढ़ होंगे. देश में डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में खुदरा ऑनलाइन लेन देन प्लेटफॉर्म यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई की अहम भूमिका बनी रहेगी और सप्ताह के अंत में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतें $107.92 प्रति बैरल रहीं. And with that, we come to the end of this edition of Market Mantra, the program that gives you a complete roundup of all that's happening in the world of business, economics and the stock markets. But for now, from the entire team, thank you so much for joining us. Goodbye. Namaskar. Market Mantra.